हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली डिस्कशन से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो कंसीडर करो, सब्सक्राइब करना, लाइक करो और कमेंट में फीडबैक दे सकते हो। आज मैंने एक वीडियो चुनी है हिंदुइज़्म, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, उसके बारे में। वन ऑफ द मेरे फेवरेट टीवी प्रेजेंटर कार्ल सेगन ने कुछ बात की है उस बारे में। मैंने वीडियो देखी नहीं है, लेकिन थोड़ा एक्साइटेड हूँ कि क्या कहा होगा उन्होंने, क्योंकि वो टीवी प्रेजेंटर ही नहीं थे, सिर्फ एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी थे, साइंटिस्ट भी थे, और क्या उसे कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं शायद, जो यूनिवर्स और इन सारी चीज़ों पे रिसर्च करते हैं या में स्पेशलिटी रखते हैं। तो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अर्ली फेमस साइंटिस्ट, जो कि टीवी के दौर में आने के बाद में कार्ल सेगन। और जिस किसी ने भी बिग बैंग थ्योरी देखा होगा, उसमें जो शेल्डन का कैरेक्टर है वो कितना ज़्यादा बड़ा फ़ैन होता है इनका, वो उससे भी पता चल गया होगा। एनीवेज, वीडियो देखते हैं। Many cultures, the customary answer is that a god or gods created the universe बहुत out of अर्ली nothing. एज इस टाइम। But if we wish to pursue this question courageously, we must, of course, ask the next question. Where did God come from? If we decide that this is an unanswerable question, why not save a step and conclude that the origin of the universe is an unanswerable question? Or, if we say that God always existed, why not save a step and conclude that the universe always existed? There's no need for a creation. It was always here. These are not easy questions. Cosmology brings us face to face with the deepest mysteries, with questions that were once treated only in religion and myth. ये उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि यूनिवर्स कहाँ से आया, हम सब कहाँ से आए, गॉड से। तो गॉड कहाँ से आया, ये तो आंसर नहीं दिया जा सकता। तो फिर हम ये क्यों ना कहें कि यूनिवर्स कहाँ से आया, यही आंसर नहीं दिया जा सकता जब गॉड का कोई प्रूफ नहीं है। ये एक बहुत ही, आई थिंक 3000 या 2500-2600 साल पुराना, जब ग्रीक फिलोसोफर ने इसके बारे में बात करनी शुरू की थी, इतना पुराना ये कॉन्सेप्ट है। ये कंटिन्यूसली सर्कुलर लॉजिक वाला ये क्वेश्चन है जो चला आ रहा है। तो आई थिंक हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से इस पे Who knows for certain? बात होगी। Who shall here declare it? Whence was it born? Whence came creation? The gods are later than this world's formation. Who then can know the origins of the world? None knows whence creation arose, or whether he has or has not made it, he who surveys it from the lofty skies. Only he knows, or perhaps he knows not. These words are 3,500 years old. वीणा का म्यूजिक वन ऑफ द मेरा फेवरेट है, बाय द वे। They're taken from the Rig Veda, a collection of early Sanskrit hymns. The most sophisticated ancient cosmological ideas came from Asia, and particularly from India. Here, there's a tradition of skeptical questioning and unself-conscious humility before the great cosmic mysteries. कितना अच्छा लगता है ना ये सुन के, और उतना ही बुरा लगता है या दुख होता है देख के कि हम कहाँ थे और उस हिसाब से कहाँ से लाइक कहाँ होना चाहिए था और क्या कहाँ पे हैं। मे बी शायद मे बी हम शायद धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन इसको देख, इन बातों को सुन के या सोच के लगता है कि यार हम इतना पहले अगर इतना एडवांस हो सकते थे तो क्या हुआ होगा यार। हमारी कुछ लाइक जीन ऑल्टर टेक्नोलॉजी यूज़ हो गई क्या हम पे, जो हमें ब्रेक लग गए हमारे। Amidst the routine of daily life, in say the harvesting and winnowing of grain, people all over the world have wondered, where did the universe come from? Asking this question is a hallmark of our species. There's a natural tendency to understand the origin of the cosmos in familiar biological terms. The mating of cosmic deities, or the hatching of a cosmic egg, or maybe the intonation of some magic phrase.
is our modern scientific creation method. It comes from the same human need to solve the cosmological riddle. Most cultures imagined the world to be only a few hundred human generations old. Hardly anyone guessed that the cosmos might be far older, but the ancient Hindus did. They, like every other society, noted and calibrated the cycles in nature. The rising and setting of the sun and stars, the phases of the moon, the passing of the seasons. The Pongal festival is the rejoicing in the fact that there are cycles in nature. But how could such cycles come about unless the gods will them? And if there are cycles in the years of humans, might there not be cycles in the eons of the gods? The Hindu religion is the only one of the world's great faiths dedicated to the idea that the cosmos itself undergoes an immense, indeed an infinite, number of deaths and rebirths. It is the only religion in which the timescales correspond, no doubt by accident, to those of modern scientific cosmology. Its cycles run अच्छा by accident चलो ठीक है मान लेते हैं from our ordinary day and night to a day and night of Brahma, 8.64 billion years long, longer than the age of the Earth or the Sun, and about half the time since the Big Bang. And there are much longer time scales still. There is the deep and appealing notion that the universe is but the dream of the god, who, after 100 Brahma years, dissolves himself into a dreamless sleep, and the universe dissolves with him. Until, after another Brahma century, he stirs. ये उड़ीसा का सन टेम्पल तो नहीं है क्योंकि जो कोणार्क उड़ीसा में कोणार्क है वहाँ का सन टेम्पल है. हर किसी ने जिसने थोड़ी सी भी हिस्ट्री बुक ढंग से खोल के देख ली होगी उसको पता होगा उसके बारे में. बहुत जगह बात होती है, बहुत फेमस है. और ये जो मूर्ति है इसी टाइप की मूर्ति हमेशा वो रथ की शेप में है. तो शायद मुझे लग रहा है कि शायद मे भी शायद ना भी हो. और पीछे का जो लाइक फौना और फ्लोरा है, जो नारियल के पेड़ थे और इस तरीके का जो था, उससे भी लग रहा है कि मोस्ट लाइकली शायद उड़ीसा हो सकता है. Recomposes himself and begins again to dream the great cosmic lotus dream. Meanwhile, गांधी जी का एक जंतर होता था हर एनसीईआरटी की बुक में. मैंने एनसीईआरटी की स्कूल से पढ़ाई की है तो उसका बता रहा हूँ कि जब भी लगने लगे ना कि तुम बहुत ज़्यादा बुरी हालत में हो तो किसी लाइन में सबसे पीछे खड़ी हुई गरीब बच्ची जिसके पास रोटी नहीं है उसके बारे में सोचो, और सोचो कि तुम्हारा अगला कदम उस पर क्या इफ़ेक्ट डालेगा. इसको गांधी जी का जंतर बोल के बुक के आगे लिखा होता था. पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा. मैं कई बार उस एज में पढ़ने की कोशिश की एज ए किड और समझने की कोशिश की, बट शायद उस वक्त इतना समझ में नहीं आया. लेकिन अब समझ में आती है उसकी ऑल्टरनेटिव एप्लीकेशन. जब लगे ना कि हम एज एन इंडियन हम यार बहुत ही मतलब बुरे हालात में हैं, तो शायद हमें इन चीज़ों को देख लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि जब हम काफ़ी अच्छे हालात में रह चुके हैं पहले और शायद दोबारा भी अच्छे हालात में जा सकते हैं. और जब लगने लगे कि नहीं हम बहुत ही ज़बरदस्त हैं और हमें बाकी सब ख़त्म है, तो थोड़ा सा जो गरीबों वाली जो CNN और वेस्टर्न मीडिया पोर्ट्रे करता है BBC, उसको भी देख लेना चाहिए. Elsewhere, there are an infinite number of other universes, each with its own god, dreaming the cosmic dream. इसको कहते हैं मल्टीवर्स थ्योरी. जो मॉडर्न साइंस है जो उसने डेवलप की है मल्टीवर्स थ्योरी, वो हमारे ट्रेडिशंस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. ये सोच के बहुत अच्छा लगता है. These great ideas are tempered by another
perhaps still greater. It is said that men may not be the dreams of the gods, but rather that the gods are the dreams of men. In India, there are many gods, and each god has many manifestations. These Chola bronzes cast in the 11th century include several different incarnations of the god Shiva, seen here at his wedding. The most elegant and sublime of these bronzes is a representation of the creation of the universe at the beginning of each cosmic cycle, a motif known as the cosmic dance of Shiva. The god has 4 hands. In the upper right hand is a drum, whose sound is the sound of creation. In the upper left hand is a tongue of flame, a reminder that the universe, now newly created, will, billions of years from now, be utterly destroyed. Creation, destruction. These profound and lovely ideas are central to ancient Hindu beliefs, as exemplified in this Chola temple at Dharasuram. They are a kind of premonition of... सॉरी सर, ये एंशियंट आइडियाज़ जो हमारे रिलीजन के थे ये अब एंशियंट ही हुए हैं. आजकल के टाइम में लोग पंडित जी को पैसे दे के एग्ज़ाम पास करवा दो और जुगाड़ करवा दो और ये वाले लेवल पे ले आए हैं रिलीजन को. मंदिर से पैसे चोरी कर लो, मंदिर में पैसे चढ़ा के काम निकलवा लो, भगवान को घूस देने वाले लेवल पे ले आए हैं. Modern astronomical ideas. Without doubt, the universe has been expanding since the Big Bang, but it is by no means clear that it will continue to expand forever. If there is less than a certain amount of matter in the universe, then the mutual gravitation of the receding galaxies will be insufficient to stop the expansion, and the universe will run away forever. But if there is more matter than we can see, hidden away in black holes, say, or in hot but invisible gas between the galaxies, then the universe holds together and partakes of a very Indian succession of cycles, expansion followed by contraction, cosmos upon cosmos, universes without end. If we live in such an oscillating universe, then the Big Bang is not the creation of the cosmos, but merely the end of the previous cycle, the destruction of the last incarnation of the cosmos. Neither of these modern cosmologies may be altogether to our liking. In one cosmology, the universe is created somehow from nothing 15 to 20 billion years ago and expands forever, the galaxies mutually receding until the last one disappears over our cosmic horizon. Then the galactic astronomers are out of business, the stars cool and die, matter itself decays, and the universe becomes a thin, cold haze of elementary particles. In the other, the oscillating universe, the cosmos has no beginning and no end, and we are in the midst of an infinite cycle of cosmic deaths and rebirths, with no information trickling through the cusps of the oscillation. Nothing of the galaxies, stars. तो यानी यार कितना फैसिनेटिंग लगता है. यहाँ फैसिनेटिंग वर्ड यूज़ करने वाला वर्ड है. कितना लगता है ये फैसिनेटिंग कि हम क्यों हैं, फिर हम एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हैं अगर बस ये बस हो जा रहा है, डिंग डिंग ये ऑसिलेशन कंटिन्यूसली हो जा रहा है. और क्योंकि गैलेक्सीज़ कितनी बड़ी हैं, उसके बाद जो हमारा सोलर सिस्टम है वो उसके सामने कितना नॉन नेग्लिजिबल है. उसके बाद हमारा प्लैनेट सोलर सिस्टम के साइज़ के आगे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. हम एज एन इंडिविजुअल पूरे प्लैनेट के साइज़ के आगे नेग्लिजिबल है. तो हम इस पूरे सिस्टम के आगे कितने ज़्यादा नेग्लिजिबल हो सकते हैं. और फिर भी हमारे इस छोटे से दिमाग में इस पूरी चीज़ को एटलीस्ट
एक मेंटल लेवल पे इनकम पास करने की कैपेसिटी है. Those फैसिनेटिंग. planets, life forms, civilizations evolved in the previous incarnation of the universe, trickles through the cusp, flitters past the Big Bang to be known in our universe. यार ये वाली जब मैं इस तरीके की कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखता हूँ ना, तो मैं थोड़े दिन के लिए एक विषाद में चला जाता हूँ. विषाद कह लो, डिप्रेशन को विषाद कहते हैं. आई थिंक हिंदी में डिप्रेशन को विषाद कहते हैं. डिप्रेशन, बट हाँ, मैं डिप्रेशन नहीं कहता, पर मैं एक गुम हो जाता है मेरा दिमाग ये सोच के कि पहली बात तो हमारी औकात क्या है, जो भी कुछ हम जानते हैं उसकी क्या औकात है, और हमारी क्या औकात है, अगर नेक्स्ट स्टेप की हमारी क्या औकात है, और फिर हम इतनी टेंशन ले ही क्यों. और फिर जब हिंदुइज्म का एक कोट है कि ये जो सब हम अपने आसपास देखते हैं सब माया है, तो लगता है कि यार वो तो साइंटिफिकली भी सही है वो बात. बट एनीवेज यार, इन भाई साहब को देखना मुझे बचपन से ही पसंद है, और मैं हमेशा ही देखता हूँ, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता हूँ देखने की. और आई थिंक मैं इस चैनल पे शायद एजुकेशन या फिर थॉट प्रोवोकिंग चीज़ों को लाना पसंद करता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, श्वेताब की बहुत सारी वीडियोस मैं इसीलिए देखता हूँ क्योंकि वो नए नए टॉपिक्स पे एक नया पर्सपेक्टिव अपना शेयर करता है, जो कि मेरा मोस्टली अलाइन होता है उसके साथ. तो अगेन, और दूसरे जितने भी क्रिएटर्स हैं, तो होपफुली ये वीडियो जिन लोगों ने देखी होगी पहली बार उनको मज़ा आया होगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.